Hello students, so let's start the new chapter from class 6, chapter number 11, light, shadow and reflections. What is light, what is shadow and what is reflections? In the class 6, we first talk about the luminous. What is luminous objects? Luminous objects like the sun that gives out or emit light of their own are called luminous objects. मीन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं लाइक अ सन जिनके खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट को देते हैं या एमिट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट. दैट ऑब्जेक्ट हु हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जिनका खुद की चमक होती है, दैट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. We need a source of light and an opaque object to see a shadow, and a shadow is obtained only on a screen. If we want to shadow of any object, we need first an opaque object, and shadow is obtained only on a screen. We discussed about opaque object in previous chapter. In opaque object we cannot see the other side, in the other side of the object. If like this table is opaque object, we cannot see under the table. Okay, so this is the example of opaque objects. And the ground walls of room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. आप in your everyday life you can see the ground. when आप जब ground पे चलते हैं, ऊपर से धूप पड़ती है तो आपने shadow नीचे देख सकते हैं. walls of a room, if you switch on the light in your room, you see your shadow in the walls of room. Buildings or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. If you want to see the shadow, you need a screen where you see your shadow. And so grounds, walls of room, building, they act as a screen for you to show the shadow of you and your any objects in that places. Sometimes shadow of an object gives an idea about its shape. जो समटाइम्स क्या करते हैं, जो शैडो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो ऑब्जेक्ट्स के किस टाइप का ऑब्जेक्ट्स है. अगर हम वी कैन नॉट सी, इफ यू आर नॉट एबल टू सी डायरेक्ट द ऑब्जेक्ट, बट यू कैन एबल टू सी द शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, you can know about the shape of the objects. Okay, sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object, but it is not always correct. Maybe many times shadow हमें mislead कर सकता है exact object की shape क्या है. Okay, opaque objects do not allow light to pass through them. जो opaque objects do not allow light to pass through them. जो opaque object होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी हर चीज़ को मतलब close कर देते हैं. वो they are not allow anything to pass through them. If I use torch, if I use this torch in the opaque objects like this, the light is not the table is not allow the light to pass through these table to under the table. ये यहीं पे रुक गई है. Okay, if I use this torch, okay, if I use this torch in this table is not allowed this light to pass through them. Okay, so this is the example of opaque object. Opaque object is not allowed the light to pass through them. And the next is transparent objects allows light to pass through them and we can see through these objects clearly. But those transparent objects होते हैं वो light को जाने देते हैं, पास होने देते हैं, एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट क्लियर. हम उसके थ्रू हम डायरेक्ट चीज़ों को देख सकते हैं. अगर लाइट पास हो रही है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द अदर हैंड साइड ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को आर पार दे सकते हैं. ओके, सो द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट. And translucent objects allow light to pass through them partially. So translucent objects क्या होता है, partially जाने देता है, थोड़ा सा लाइट जाने देगा, बाकी नहीं जाने देगा. तो translucent object means allow light to pass through them partially. So this is the main point. Opaque objects do not pass through them light, and transparent objects allow, and translucent objects partially allow. Okay.
pinhole camera. In this chapter we discuss about pinhole camera. Pinhole camera can be made with simple materials and can be used to image the sun and brightly lit objects. Okay, and the next point is, this is my main point, light travel in which line? Always remember, light travel in straight line. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट, लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाती है. मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज. जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है वही हमें क्या देता है? क्लियर इमेज. ओके, मिरर रिफ्लेक्शंस गिव्स अस क्लियर इमेज. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, and we meet again in next chapter.